क्रैक द वेलनेस कोड यानी CWC इंडियन कम्युनिटी सेंटर ICC का एक प्रोजेक्ट है। ICC नॉर्थ अमेरिका में प्रोफेशनली काम करने वाला लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस कम्युनिटी सेंटर है। यह हर उम्र के लिए वेलनेस यानी भलाई को प्रमोट करता है दोस्तों, जिसमें जिम्नाजियम, योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स शामिल है। कम्युनिटी ने 270 करोड़ रुपयों का निवेश किया हुआ है और इसका सालाना बजट 40 करोड़ है। जुलाई 2018 में अपने एक बहुत ही बड़ी वेलनेस कॉन्फ्रेंस के बेहद सफल और प्रभावशाली आयोजन के बाद CWC पूरे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक जबरदस्त वेलनेस मूवमेंट के तौर पर फैला है। एक लार्ज NRI पॉपुलेशन के साथ ही इसकी पहुंच देश विदेश तक फैली हुई है। CWC वेलनेस मूवमेंट 3 गजब के विजनरी द्वारा को फाउंडेड किया गया था, जिनमें डॉक्टर पंकज विज, नरेन बख्शी जो चीफ मेंटर और ICC के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं, मिस्टर सोमनाथ चैटर्जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से शामिल हैं। CWC तेजी से एक पावरफुल ब्रांड के रूप में उभरा है, जो कि एक वेलनेस इकोसिस्टम के द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ हीरोज, लाइफस्टाइल प्रैक्टिशनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हेल्थ टेक प्रोफेशनल्स शामिल हैं। यह लाइफस्टाइल, डाइट, वेलनेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिव केयर, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और अंदरूनी एनालिटिक्स के जरिए से लोगों के समग्र स्वास्थ्य पर फोकस करता है। CWC का मिशन है इवेंट्स की एक सीरीज और उम्दा प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया को एडुकेट करना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना और प्रभावित करना। यह अभी तक सभी वर्गों जैसे सीनियर्स, यूथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहद प्रोडक्टिव जर्नी के रूप में सक्सेसफुल रहा है। अभी तक CWC ने बहुत बड़ी संख्या में वेलनेस बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया है, जिनमें 700 प्लस सोल्ड आउट इवेंट्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। इन इवेंट्स में वर्कशॉप्स, हेल्थ हीरोज के द्वारा मेंटरिंग, हेल्थ एक्टिविटी सपोर्ट ग्रुप्स, क्लिनिक्स और इसको मॉनिटर करने के लिए कई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं दोस्तों। CWC का लक्ष्य देश विदेश की पर्सनालिटीज के साथ मिलकर एक ऐसे मेजरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी सेवाएं देना है, जो कि सभी वर्गों की वेलनेस और हेल्थ यानी स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देता है। साथ ही इसका लक्ष्य इंडियन कम्युनिटी पर फोकस करना है, ताकि 5 सालों के भीतर दुनिया में 1 मिलियन NRIs को इससे जोड़ा जा सके। इस लक्ष्य हेतु कई पार्टनर्स आगे आए हैं और एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जैसे टारगेट यूजर्स को इसमें शामिल किया गया है। कई और भी कंटेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर नेटवर्क्स, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च और ट्रेंड्स के तौर पर शामिल हो चुके हैं। साथ ही इसमें ह्यूम सेंटर फॉर बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ, साउथ एशिया हार्ट सेंटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ट्रू नॉर्थ ऑफ सेंटा रोजा और फिजिशियंस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिव मेडिसिन और द AAPIO यानी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे कई मुख्य पार्टनर्स भी शामिल हैं। CWC ने अपने अनुभव की पूंजी के रूप में पहला सुख को सपोर्ट करने के लिए परफेक्ट सेटिंग्स प्रोवाइड कराई है। पहला सुख इंडिया में एक इंडिया वेलनेस इनिशिएटिव है, जिसे इंडी फैमिली फाउंडेशन के साथ ही मिस्टर नरेन बख्शी एज अ चीफ मेंटर के तौर पर मैनेज करते हैं। इसमें आगे CWC के द्वारा सभी जरूरत के संसाधनों और बेस्ट प्रैक्टिसेस मुहैया करवाई जाएंगी, जिसमें नेक्स्ट ईयर एक AI बेस्ड खुशी ऐप भी शामिल है। तो आइए और इस मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। Exploitation of nature, diseases due to unhealthy lifestyle, voicing the voiceless, issues of work-life balance, lacking or over-expressing emotions, how to vocal the locals for global. The cause of all these problems is lack of awareness and encouragement in people. Indie Family Foundation is contributing and making measurable progress towards its vision of III, that is, working for India by doing innovation which impacts the individuals. Indibini Private Limited, through its foundation, is moving well beyond its business activities and contributes to a positive societal impact through diverse community engagement initiative to spread the essence of Vasudev Kutumbakam. The whole world is one family. The focus areas of the foundation are health and wellness, environment and animals, relationship communication, skill development and empowerment. Our team is led by Mrs. Premlata Sani,
Chand as chairperson and Mr. Basant Jain as co-chair. Mrs. Premlata was diagnosed with cancer in 1999. During her recovery, she experienced the benefit of natural life from food to daily lifestyle. After the recovery, she decided to devote her life to cancer patients and their wellness via yoga, pranayam, and other natural lifestyle techniques. Mr. Basant believes in wellness for all human beings and devoted his life and unconditional love for society. As a co-chair of the Indie Family Foundation, he always stands to heal the broken hearts of the people and works for supporting underprivileged and uneducated members of the society. They are supported by Mrs. Divya Rathi Jain and Mrs. Surbhi Sharma Jain as managing trustees, with an army of volunteers and strategic partners. Since 2009, the foundation team has engaged with various social initiatives like International Day of Happiness, educating kids with Apni Jagah NGO, Winter on Wheels. Some recent initiatives with the greatest achievements are Ek Chitti Maa Ke Naam in 2019, Sow a Seed Rakhi Yatra in 2019. The target of this campaign was to spread the message of sustainability amongst the citizens of India by reducing, reusing and recycling. During this campaign, nearly 50,000 seeds sown, 25,000 sapling pledged to take care of Mother Earth. More than 200 women and 20 farmers were empowered. We also honored 10,000 plus soldiers, policemen by tying seed rakhis crafted by Picky Flow skilled women, along with a personal thank you postcard written by children from various schools of Jaipur, feeding hungry stray animals during pandemic lockdown 2020. The foundation associated with the NGO Raksha Jaipur, keeping in mind the responsibility humans have towards the voiceless. We donated 10% of sales on any wellness product purchased from indiegifts.in to feed stray animals. And now the foundation is initiating Pehla Sukh, India Wellness Initiative. The object is to support the health and wellness of all living beings, and the primary focus is to bring the best of East and West lifestyle practices to 5 millions of Indians in the next 5 years. The efforts of the foundation have already touched the lives of more than 1 million people across India and Indian diaspora. We are evolving while remaining responsive to the ever-changing needs of society. To know more about us, join our family www.indiefamily.org. मैं नरेंद्र बख्शी हूँ, सिलिकॉन वैली में रहता हूँ और जयपुर में भी रहता हूँ। तो ये पूरा प्रोग्राम करीब 2.5 साल पहले सिलिकॉन वैली में चालू हुआ और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो हमारी इच्छा हुई कि इस साल जयपुर से पूरे देश में इस प्रोग्राम को लाया जाए। तो मैं वहाँ का को-फाउंडर हूँ और यहाँ के चीफ मेंटर हूँ। तो मेरे को बहुत बहुत खुशी है कि आज चौथी वेबिनार हो रही है और हमारा गोल है कि कम से कम 5 साल में 50 लाख भारतीयों को लाभ पहुँचाया जाए। और इस काम में आपको ये मालूम ही है कि कोई भी अच्छे काम करने के लिए जब गवर्नमेंट और प्राइवेट समाज जुड़ जाता है तो बहुत आगे बढ़ता है। तो 21 जून को पहला सुख का उद्घाटन माननीय चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत ने खुद किया। उसके बाद आज एक बहुत खुशी की बात आपको बताने वाला हूँ कि श्री रघु शर्मा जी, जो कि आज हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको बहुत काम करना पड़ रहा है कोविड के चक्कर में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश आप सबके लिए भेजा है। तो ब्रिंग दैट मैसेज प्लीज। समस्त राजस्थान वासियों को मेरा नमस्कार। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है और उससे हमारा देश और प्रदेश भी अछूता नहीं है। ये जो चुनौती हमारे सामने आई है, इसका मुकाबला हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे एनजीओज हैं और जो व्यक्ति लोग इसमें रुचि लेते हैं आम व्यक्ति के कल्याण के कामों में, उन सभी लोगों के सहयोग से इस महामारी के प्रकोप से हम हमारे प्रदेशवासियों को बचाने के काम में लगे हुए हैं। हमारी सरकार जिस मुस्तैदी से कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान में लगी हुई है और जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम निरंतर मजबूत करते जा रहे हैं, चाहे टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे हमारी रिकवरी रेट हो, चाहे हमारी मृत्यु दर हो, हम सबको नियंत्रित रखते हुए इस महामारी से आम आदमी को बचाने का काम कर रहे हैं।
जन सेवा के कार्य में जुटे हुए समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो अवधारणा हमारी है, उस अवधारणा को हम तभी मूर्त रूप दे सकते हैं जब समाज का हर वर्ग इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे और सरकार भी हर व्यक्ति का साथ ले। मुझे आज पहला सुख इंडिया वेलनेस मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा मुझे बताया गया कि भारत में इस पहल की शुरुआत इंडिया कम्युनिटी सेंटर तथा सिलिकॉन वैली के वेलनेस मूवमेंट के सहयोग से इंडी फैमिली फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। मैं खास तौर से हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, राजस्थान के आम और आवाम हैं, सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ें। प्रदेश में हेल्थ अवेयरनेस को एक जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के दिल में ये जज्बा हम पैदा कर सकें कि आपको स्वस्थ रहना है, समय पे जांच करानी है और समय पे चिकित्सीय परामर्श आपको लेना है। मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निरोगी राजस्थान की संकल्पना व्यक्त की थी और उस पर काम करना शुरू किया था। मुझे बताया गया कि आयोजकों ने आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को स्वास्थ्यवर्धक और प्रामाणिक जानकारी देने का लक्ष्य रखा है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से www.pehlasukh.organization पर ये महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन वेबिनार की श्रृंखला में इस बार की जो थीम है वुमेन वेलनेस वेबिनार फॉर ए हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्ग व्यू 20 सितंबर 2020 शाम 6 बजे होने जा रही है, जो कि महिलाओं पर केंद्रित है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी परिवार में महिला स्वस्थ रहेगी तो वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो जो फोकस आपने किया महिलाओं पे, ये भी बहुत प्रशंसनीय काम है। हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान दें। नरेंद्र बख्शी जी द्वारा किए गए कामों के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहती है। ये अमेरिका में रहते हुए भी हमारे देश और प्रदेश के लोगों की निरंतर चिंता करते रहते हैं। मुझे बताया गया कि पहला सुख का लोकार्पण हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जून 2020 को एक संदेश देके किया गया था। आज से लगभग 18 वर्ष पहले भी इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री राजीव अरोड़ा जी, राजस्थान के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ मिलके टाई राजस्थान का लोकार्पण करवाया था और आज वह बढ़कर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए सीखने का एक बहुत अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। मैं इस मुहिम में जुड़े आयोजकों नरेंद्र बख्शी जी, प्रेमलता सांड जी, बसंत जैन जी, वीके काला जी, गुरुदास जी, नितिन जैन जी, दिव्या जैन जी, जितेंद्र गौतम जी और डिफेंस से जुड़े मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी को साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत कल्याण के इस महायज्ञ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने में कामयाब रहेंगे। मैं प्रदेश के सभी लोगों से इस मुहिम में जुड़ने और अन्य लोगों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करने की अपील करता हूं और मेरे द्वारा और सरकार के द्वारा जो भी इस मुहिम में सहयोग हो सकता है वो सहयोग इनको निरंतर मिलता रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि आज का जो प्रोग्राम है वो 4 बहुत ही ज्ञानी लेडीज़ की तरफ से हो रहा है और सारे स्पीकर, सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम में ही लेडीज़ हैं। तो उनकी सबसे पहले मेरे को उनके जो लीड हैं नीता जी बूचरा, उनको बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वो नीता जी बूचरा बचपन से जानता हूँ, उनका घर हमारे घर से पास ही था, उनकी पूरी फैमिली से मेरा परिचय रहा है। लेकिन उसके बाद
मैंने उनको देखा कि वो बढ़ती जा रही हैं। तो वो एक बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं और दुनिया में एक बड़ी एंटरप्रेन्योर भी बन गई हैं। ज्वेलरी में उनका इतना बड़ा नाम है कि दिल्ली का जो म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम, और सालार जंग म्यूज़ियम जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पर भी इनकी ज्वेलरी का प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी बात ये करी इन्होंने कि ये फाउंडिंग चेयरपर्सन है वुमेन विंग ऑफ फिकी फ्लो, ए बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया। उसके साथ साथ ये आगे बढ़ती कई जगह इन्वॉल्व हो चुकी हैं और ये वॉलंटियर लीडर हैं आज हमारी। ये हमारे साथ पहला सुख में तो है ही हैं, लेकिन ये को-चेयर हैं इंडिया सार्क चैम्बर वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल की, और वो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल बिजनेस फोरम इन साउथ अफ्रीका एंड चाइना साउथ एशिया बिजनेस फोरम इन चाइना। शी इज़ द ट्रस्टी एंड बोर्ड मेंबर ऑफ टेलीनॉमिक्स। अब इससे ज़्यादा तो मैं बोलता ही जाऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करती हैं। इनका स्वागत। अब नीता जी आपके हाथ में है। Thank you so much, Bakshi Saab, for that wonderful introduction. I am truly humbled. गुलाबी शहर जयपुर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन. A good evening to everyone and especially to the virtual audience. Unprecedented times, new challenges, new opportunities. These opportunities have given us another wonderful opportunity to enrich the health portfolios of our lives. Good health is a state of complete harmony of the mind, body, and spirit. A healthy outside begins from the inside. Healthy body, healthy mind all lead to a very happy life. Women need to start taking their physical and emotional health into their own hands and not wait for symptoms of the disease before they seek help. Empowered women empower women, empower the whole family. A fit and healthy body is the best fashion statement. आरोग्य, आध्यात्म, आनंद की इस जर्नी की मुहिम उठाई है पहला सुख ने इन एसोसिएशन विद CWC सिलिकॉन वैली, और इसको मैनेज कर रहे हैं इंडी फैमिली फाउंडेशन. और अपो दीपो भव, बी योर ओन लाइट. आप खुद तो प्रकाशवान हो ही, साथ में दूसरों को भी प्रकाशित करें. इसी उद्देश्य के साथ ये विमेन्स वेबिनार की संरचना की गई है. अ विमेन्स वेलनेस वेबिनार फॉर अ हेल्दियर एंड stronger you. We have with us 3 powerhouse speakers: resilient, empathetic, patient, passionate, committed doctors. They are the champions of change. They believe in walking the talk. They take their area of expertise very seriously, and they sincerely believe that one has to practice what one preaches. It is indeed an honor to introduce the powerhouse speaker panelists that we have with us today. We are indeed very grateful to them for the gift of their time. इसी के साथ, I would like to introduce the first speaker, Dr. Sheila Nambiar. She is a practicing gynecologist and lifestyle medicine physician. She is currently the president of Indian Society of Lifestyle Medicine. She has taken her practice
to a different level by including fitness, food, lifestyle to women, conducting workshops and retreats in the beautiful heaven of Ooty. Today, she has touched the lives of thousands of women globally who see her as a catalyst for growth with the authentic scientific and ethical understanding of how to prevent chronic disease, lose weight, and lead the best quality of life possible. A very warm welcome to you, Dr. Sheila Nambiar. आपका तहे दिल से स्वागत. Our second panelist is Dr. Chavi Mehra. She is the quality head of RxDx Healthcare. She's also the medical director of CareFit, telemedicine consultation services based out of Bangalore. Besides this, she is a busy physician and diabetologist. She has 25 years of experience, 13 of which she has practiced in California. Dr. Chavi brings to India the best quality healthcare practice of the West. A COVID survivor herself, she has designed and implemented home-based COVID care services, which has helped more than 300 patients to recover from COVID without hospitalization. A mother of 2 adult children, deeply spiritual, physically fit, she works with the person and not the disease. A very warm welcome to you, Dr. Chavi. Thank you. Our third panelist today is Dr. Joma Basak. She is a training and supervising psychoanalyst of the Indian Psychoanalytical Society. She is a member of the International Psychoanalytical Association, London. She is the mentor of the School of Liberal Arts of Mass Comm, Karnavati University, Ahmedabad. She has her own private clinical practice in Kolkata. Nurturing the self and others with compassion is her motto in life. A very warm welcome to you, Dr. Joma. With these lovely introductions of our panelists today, we begin the panel discussion. The first question I would like to ask Dr. Sheila Nambiar. You're a busy, demanding OB-GYN practice you have. What made you take up lifestyle medicine and fitness as an extension of your practice? Thank you. Thank you, Nita, for that question. And thank you, Pehla Sukh, for inviting me on this webinar. When I started practicing, introducing fitness, food, and lifestyle into my practice way back in 2000, it wasn't called lifestyle medicine. But we had enough evidence at that time to show that exercise had multiple benefits, starting from anywhere from preventing Alzheimer's to depression, diabetes, hypertension, premenstrual tension, postmenopausal, osteoporosis, etc. So as a physician, I felt it was my duty to give my patients the option of having to utilize exercise, food, and lifestyle change in their journey of recovery or even prevention of disease. Secondly, I think it is our duty to give women the skills and help them prevent disease rather than just treat the symptoms. That to me is true empowerment. And from a personal perspective, I know that exercise and food and lifestyle, the optimum lifestyle, sleep, management of stress, etc., is so very important for a better quality of life. So to me, it's just a natural segue into lifestyle medicine, which is a pretty recent field of medicine. But I've been implementing it for a while now. Right now, it's come to India, and I'm happy to say that Indian Society of Lifestyle Medicine is very much here to stay. And as a president, I invite all physicians on board. Thank you so much, Dr. Sheila. Definitely, we are all on board. Dr. Chavi Mehra, the next question comes to you. With your equal practical experience,
in the West and here in India, what have you felt the difference in health awareness of Indian women compared to their Western counterparts? Neeta, thank you. And I want to also thank Pehla Sukh for this initiative and the wonderful initiatives they have planned to improvise the health of the Indian population. Great initiative, and thank you for getting me on the forum. The women in the West, Neeta, are extremely health aware. And this is because the society in the Western society actually encourages independence and it encourages self-reliance. Self-reliance या आत्मनिर्भरता हिंदी में कहा जाता है is one of the most important aspects of self-awareness, which also means health awareness. And ये चीज both males and female में वहाँ पाई जाती है. जैसे आपने अभी कहा कि fitness is the best fashion statement. ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने. And the people in the West are very aware of this. They believe in that. हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, भारत में हमको शुरू से कहा जाता है giving is actually the best quality. So जब हम selfless giving करते हैं, we are highly admired, we are respected. And as impressionable children, we learn to do that. We learn to just give. And this is more so, men and women दोनों में है ये habits, and it's a great quality to have, but not the expense of losing self-awareness or your health. So क्या होता है, the women actually being more caretaking kind of character, they actually completely forget their own selves in the realm of taking care of everybody. And as a result of it, मेरे clinic में in Bangalore, I have women that come और वो मुझे अपने husbands की labs discuss करती हैं. 5 साल वो travel कर रहे हैं, अपने aged parents की labs discuss करती हैं, अपने बच्चों की labs discuss करती हैं, और उन्होंने खुद में 5 साल से कभी labs check नहीं करी होती हैं. उनको ये नहीं पता कि are they carrying one of the non-communicable lifestyle diseases. तो कहीं पे as a culture जब हम ये ingrain करेंगे कि giving is a beauty of the Eastern culture, but उसके साथ साथ being self-aware and to be self-aware about your health. और जब women of the house will take care of her health, जैसे कि रघु शर्मा जी ने भी कहा था कि when the women of the house is strong and healthy, the outcomes of the whole family's health outcomes improve. तो मेरी नजर में सबसे जरूरी है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर इतना हमें अपनी गिविंग नहीं छोड़नी है, पर उसके साथ हमें ये वैल्यूज एडहेयर करनी जिससे हम अपनी हेल्थ एज वुमेन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड वी टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज हेल्थ अराउंड अस. तो ये फर्क है ईस्ट एंड वेस्ट हेल्थ अवेयरनेस में. बिल्कुल सही डॉक्टर शवी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त देश, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु पहल वुमन को ही खुद को करनी पड़ेगी अपने ध्यान रखने के लिए. ये एक बहुत बड़ा अहम डिफरेंस है. बिल्कुल सही कहा नीता, वेरी राइट. मैं डॉक्टर झुमा से, डॉक्टर झुमा, in line with what Dr. Sheila and Dr. Chavi's insights, how can our society do a mental and behavioral shift to make health a focus in both men and women? Thank you, Neeta. Thank you for your question. And I am very, very grateful to Pehla Sukh for giving me this opportunity and this very significant platform that has been created. I'll try to respond to what Sheila said and Chavi said and try to weave them together. I think something that Chavi said just a while back, that the pillars of Indian family, Indian society, Indian emotional life are actually held by the women of the family. And I think a lot of unconscious unawareness regarding women's internal well-being and external health is to a certain extent more prevalent, unfortunately. And that has its very, very direct impact to the children that one is bringing up and to the
I would say, the emotional well-being of the family. So if we can create this awareness, which this initiative is all about, that how I can cultivate a physical as well as an emotional integrated well-being. And this is a little difficult, but perhaps maybe the COVID situation has given us the opportunity to talk about, health in a much more integrated, cohesive manner, because what we realize is that the health awareness itself in this country, because we have such a vast population, is not as thorough as perhaps the need is. So maybe this situation gives us an opportunity to actually intervene as much as possible. Because you said, to look at not just women, but also men in kind of our family structure. I think men also, unfortunately, men's emotional life is hardly talked about. The only platform most oftenly, openly given to men in terms of emotions is maybe, the protector of the family with a very aggressive drive, or what we mostly see, a lot of anger. But men also have a lot of conflicts, a lot of sadness, loneliness. We see men going through a very difficult phase of balancing after marriage, as much as women do. I mean, we cannot ignore what the kind of emotional, physiological, social, structural changes the woman has to go after marriage. So if this kind of a dialogue is possible, this kind of an awareness is possible, starting from school itself. And as Sheila very rightly said, I mean, she's into integrated medicine itself. So when we're talking about health, if we can look at health, which is both physiological as well as psychological, I think it'll be a wonderful intervention for us. Thank you, Dr. Joma. And indeed, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहला सुख की जो मुहिम है, ये जो जंग एक तरीके की छेड़ी है, हम इसमें चाहेंगे कि सारा जो ऑडियंस है पूरे रूप से हमारे साथ इसके साथ जुड़े, पहला सुख के साथ, और इसका जो कॉज है वंडरफुल. डॉक्टर शीला, how important is diet and exercise for better health of women, and what are the roadblocks that you perceive in the implementation of these? Diet and exercise is very, very, very important, Nita. And I think the thing is, I think everybody knows that. I don't think that's, something that's kept behind the scenes anymore. Everybody's aware of it. But there are lots of roadblocks, as you say. Some of them may be biological. For instance, women with polycystic ovaries do find it difficult to lose weight. If you have a genetic predilection for diabetes, your chances of getting diabetes are higher. But that doesn't mean that you should try to prevent it or try to get to be the right weight, even though it may be a little difficult. And this is where the role of us as physicians to help and guide and motivate patients comes in. And there is a psychological aspect of these roadblocks as well. For instance, we have something called the optimism bias, where you believe that it just can't happen to you. You won't get diabetes. Even if you put on weight, it just won't happen to you. You somehow feel you won't be one of that dry statistic. But the chances of you being a dry statistic is quite high, especially in our country. And then you have all these mistaken beliefs. For instance, in India, I think it's quite common to think that as we age, it's quite normal to put on weight. And once we have our children, it's quite normal to put on weight. Women even come to me and say that after the sterilization surgery, they've started putting on weight. Or after marriage, they've started putting on weight. So there are all these misconceptions that exist and which are not real, and there's no physiological basis for it. So we need to correct those biases that people have and guide them in the right way. And I think the social aspect of weight and health is very, very important and often overlooked. And what I mean by that is, your social environment,
Who do you live with? Do the people that you live with also practice healthy lifestyle? Because if they do, then it's easier for you to practice a healthy lifestyle. If everybody is eating rich, deep fried food and sweet, very difficult for you to eat salad and beans. And if your friends exercise or are recreational exercisers, it's easier for you to exercise. So the social environment that you live in is very important, including your work environment. What do you have to eat when you go to work? Do you have a canteen? Of course, not now during COVID, but do you have a canteen that serves healthy food? Do you have top level management who encourage exercise and good health? So all of these social cues are also very, very important. And so it's not, weight and health is not an individual problem, and it cannot exist in a vacuum. It has to be a social problem. And that's where we as health caregivers play such an important role, because we can be motivators and we can be the guides and the coaches, not so much just giving advice, but helping and hand-holding to some extent. Yes, perfect. We need to be the motivators and the inspirators. We need to have, as you all, as the healthcare experts. And पूरे परिवार का वातावरण जो होगा, घर परिवार का जो वातावरण है, वो ही हमको हेल्दी रखना पड़ेगा. ये डॉक्टर शीला ने अभी हमको बताया. डॉक्टर छवि, आपने पिछले 20 साल से डायबिटीज के पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक किया है, और साथ में आप इस डिजीज के बारे में क्या सोचती हैं अगले आने वाले 10 वर्षों में? ये आप डायबिटीज को बारे में थोड़ा हमको ज्ञान की किरणें दें. थैंक यू नीता. मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है. आई ट्राइड माय बेस्ट. As Sheila said, not just advice, but literally handhold all the patients that I had, because diabetes एक ऐसी बीमारी है जिसमें psychology also बहुत role play करती है in the outcome of the disease, if you want it better. India में 1 in every 10 women पकड़ लिया जाए को diabetes है इस वक्त, and this is with gross underreporting and unequal gender healthcare availability. तो आप सोचिए रियल डेटा क्या होगा. 1990 के अंदर इंडिया में 26 मिलियन डायबिटिक्स थे. उसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो 2 करोड़ 60 लाख. 2016 में 65 मिलियन पीपल, विच इज 6 करोड़ 50 लाख. और प्रोजेक्टेड टू 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 101 मिलियन या 10 करोड़ 10 लाख कम से कम डायबिटिक्स होंगे. ये तो रिपोर्टेड केसेस है. तो आप देखिए कि हमारे देश में डायबिटीज किस तरह से बढ़ रहा है. इट इज एस्केलेटिंग. नाउ टू प्रिवेंट इट एंड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ और ये इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हमें इसकी कॉज देखनी पड़ेगी. एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड द एक्सपर्ट्स, it is rapid urbanization of India. What is rapid urbanization? Pehle people used to live in rural settings, work in farms and eat natural complex carbohydrates, unrefined foods. फिर ये लोग शहर चले गए, urbanization हो गया, ऑफिस सेटिंग में काम किया, बैठे रहे सारे दिन, मूवमेंट कम हो गया, and they started to eat refined foods, fresh fruits की जगह juices लेने लगे. तो डायबिटीज प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस के लिए सबसे जरूरी है 3 एंगल्स होते हैं. एक तो डाइट, एक होता है पोर्शन कंट्रोल, और एक होता है हमारी एक्सरसाइज या कह लीजिए थोड़ा सा मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट अवेयरनेस. मैं तो पर्सन को देख के उसकी एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली रेकमेंड करती हूँ. तो आप सोचिए सबसे जरूरी है कि मेरे पास पेशेंट्स आते कहते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं, हमें डायबिटीज कैसे हुआ. तो मैं कहती हूँ कि वेजिटेरियन इंडियंस ईट wheat, which is refined wheat. They eat rice, they eat hardly little bit of dal, hardly any sabzi, cooked sabzi खाते हैं, salads खाते नहीं हैं, और ये तीनों मील्स में खाते हैं. I can bet कि जिनमें एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं है और ये थोड़ा मीठा भी लेते हैं, और ये डाइट जो अगर हम लेंगे तो 40 की एज पे डायबिटीज क्रीप कर ही जाएगी. तो वेजिटेरियन होने की कोई लाइसेंस नहीं होता कि वी विल नॉट गेट डायबिटीज. हम भूल गए हैं कि हमारे in our olden times we used to eat millets. बाजरा खाया जाता है, ज्वार खाया जाता है, हमारे यहाँ कूटू और मिस्सी आटा.
हम भूल गए कि those are the grains that we should ingrain in our food. White rice की जगह processed white rice से थोड़ा brown rice खाया जाए. I think उनके flavors भी हमको used to हो जाएंगे. हमको वापस जाना होगा. हर मील के अंदर थोड़ी सी raw सब्जियां लेनी होंगी. और सबसे जरूरी है पोर्शन कंट्रोल. In the north we have this manuhar. एक और पूरी ले लीजिए या कुछ और खा लीजिए और किसी को मीठा खिला के खुशी मिलती है. I think this is a cultural shift that we all need. Let people and children eat what their stomach wants. We should not force feed. As a result of it, the portion controls lead, and that is one of the most important reasons why we have fat and obesity in our country. And third, so hey, sabko pata hai, it's an exercise. Dr. Sheila just mentioned, I think it's very important to be physically active and move around. And if हम इन तीन चीजों का ख्याल रखेंगे, तो आप चिंता नहीं करिए. Even genetically, your parents might be type 2 diabetes. You can prevent that disease. So I think that is wonderful. We know the road that we have to take. We have to just walk on that road. जी. Yes. और एक चीज और आप बताएं कि ये डायबिटीज अगर हो गई है तो इसके सब्सिक्वेंट जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीता, उन साइड इफेक्ट्स के लिए आपको अपने हेल्थ केयर डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना होगा. बहुत जरूरी है कि हम एवरी ईयर अपनी आईज चेक कराएं, अपना हार्ट चेक कराएं, अपना किडनी चेक कराएं. ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डायबिटीज में अफेक्टेड होते हैं. हर डॉक्टर को पता है, उसका प्लान है कि मेरे पेशेंट्स का साल में एक बार अगर ऑर्गन्स चेक हो जाएंगे तो देयर इज अ रिस्क कि हम पहले ही रोक लेंगे. और सबसे अल्टीमेटली जरूरी है कि आपकी शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है. ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ये एक्चुअली अगर आप समझ गए, अगर आपको अवेयरनेस हो गई, तो इट इज सो ब्यूटिफुली पॉसिबल. Or I have a fabulous practice over 20 years where people have really responded and worked with me to improve their diabetes. थैंक यू. तो बेसिकली हमको सम में रहना पड़ेगा और थोड़े रॉ फूड और जो पुरानी पद्धति थी वो सब चीजें हमें हमारे डाइट प्लान में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी कुछ हद तक डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए. और आप जैसे जो फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाना पड़ेगा मार्गदर्शन के लिए. थैंक यू. डॉक्टर झूमा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया? व्हाट इज आवर सोसाइटीज sense of stigma and attitude towards mental health? Is it changing? Do give us some suggestions to women in India to attain a happy and healthy life. Okay, quite a few questions together. My first response, Anita, to what is the state of mental health in India? I think I would like to be positive because there is a major shift from the time that we were going through training to the current situation where we can all see there is a very, very strong demand of mental health care from various sectors of society. And though it's a response that we find coming in the COVID situation, but I think the COVID situation has given us a kind of, I would say, impetus that all that was, kind of getting together. It's like a pressure cooker bursting. And it's just come out because with the situation where we have no other worlds left, but, our own confinement, staying at home, there is no external diluting factor. What is happening is all the internal things that we have kept inside is kind of coming out. So a very significant level of awareness has happened in our Indian community. As a matter of fact, to tell you honestly, the demand is so high at this point, we do not have enough of human resources in terms of looking at providing that kind of support in mental health. This is just the urban situation, the rural situation. Even in terms of psychiatric intervention, medical intervention, there is a huge opportunity, huge requirement by the rural community. So it is significantly different from what it was before, but there is still a humongous amount of work that can be done. In terms of stigma in society, this is still very unfortunate that
once again, the stigma is not as prevalent as before, but it still goes very strongly with our families and households. The present generation, the new student community, the young adults, they are definitely much more radical in their thought process, and they understand the requirement of mental health support at various levels in terms of being professionals, the kind of hurdles they have to overcome in terms of relationship management, in terms of being, mobile in different states, in different cities. Young adults, they grow up in another city, they're studying in another city, going to another city for work or internship. So it's a vast change that they're going through. And I think their awareness and need is much more verbal and visible. But I think we still have to work with the families. This is where perhaps mental health awareness needs to get there, that मन की खुश मन की बातें, it's not about Man ki Khushi, thank you. Sorry, I have miserable Hindi, but I still insist. But that was really good, yeah. Forgive me. I lived for a couple of years in Delhi, so with my terrible Hindi, trust Bengalis with their terrible Hindi, I still would insist on speaking in Hindi. So Man ki Khushi, Man ki Baatein ke liye, जो अंदर रहता है, layers which we cannot express socially or even in family. The persons that we love the most, that can be the very persons who hurt me the most. So वो hurt को हम कैसे negotiate करते? And not always is it beneficial that I address it to the same person, because relationship का complications बढ़ जाता है and family complications बढ़ जाता है. So the need for psychological intervention, to have therapists to speak to, helps. And therapists, I mean, these are terminologies we have in the corporate sector. They talk about coaches. So I think we just have to open up our mind to a major extent. So that's responding to two of your questions. And the last one, I believe you talked about how we can have a happier life. Now, this is actually taking off from what Chavi said in the initial phase, is that the Indian family has a wonderful quality. The Indian culture has a wonderful quality, which is the element of sacrifice. But this element of sacrifice, when it becomes something at the cost of myself, when it becomes, completely, predominantly resting on the women of the households, then it is an unfair balance. I think that is something that we need to be aware of. थोड़ा बहुत हमारा जो our aspirations, our desires, थोड़ी बहुत जो है, if we can assert them, a little bit of my happiness, a little bit of my self-dignity and worth. So maybe our daughters, our next generation young adults, young women, will not have to go through the hardships that maybe we have gone through, or the sacrifices, quote unquote sacrifices, that our grandparents, our grandmothers, our mothers have gone through. So it becomes a little lesser with every generational development. So that is something I would like to say, that to stand by with the next generation, with our daughters, or with our young women adults, to claim a little bit of their aspirations, a little bit of their happiness, a little bit of their self-worth, both internal home space as well as external professional space. Wonderful, Dr. Joma. We need to support each other, and women more so, because when women support each other, incredible things happen. And they need to cheer each other also. और ये भी समझना पड़ेगा कि थोड़ी समता में रहें सभी, और ये भी ध्यान रखें कि जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है जिंदगी में. एक कंटेंटमेंट का हमें जो भाव है वो बहुत सर्वोपरि रखना पड़ेगा अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबीइंग को बैलेंस करने के लिए. Now, this brings us to the time of a rapid fire question round. So, the first one goes to Dr. Chavi Mehra.
Chavi Mehra, doctor, this is going to be a short and sweet one-liner answers that we request the doctors to give us today. So Dr. Chavi, what is the secret of your glow and beauty? The eye of a beholder, Nita. But seriously, sleeping well and I think daily workouts for everybody and having good thoughts. So we are going to follow that daily workout every day. Yes. Yes. The second question is, what is your stress buster? You are doing so many things all at one go. My stress buster is my riyaz. I practice Hindustani vocal. Wow. And that is my only stress buster. And besides cooking, yeah. Oh, super. Please describe yourself in 3 words. Oh, wow. Okay, well, I think empathetic, disciplined, and probably creative. Super. I think we all need to follow these 3 mantras that you have given to us. Thank you, Dr. Chavi. Thank you, Nita. Thank you very much. Over to Dr. Joma now. I'm scared. Dr. Joma, what is better, certificate or experience? Okay, the truth is that both are required in life, Anita. But unless I have experience, अंदर फाउंडेशन बुनियादी नहीं है तो वो सर्टिफिकेट से हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे. So both are complementary. Beautiful. And जिंदगी में you are grateful for what? I think I'm grateful for where I am currently with life. I'm grateful that the COVID situation has not affected my loved ones. Yeah. Gratitude, very important in life. Yes. Yeah. Please describe yourself in 3 words. Tough one. Okay. I would like to believe that I am, like Sheila said, compassionate. Not Sheila, sorry, Chubby said, I'm sorry. Compassionate. I would like to believe I'm dynamic. And maybe a little bit of fun and creative. Super. Thank you. Over to you, Dr. Sheila now. Dr. Sheila, we wish to know your biggest strength. I think, Nita, my strength would be my resilience. I'm able to pick myself up, come what may, dust off, and then just keep going. I know right now also your throat was not too good, but you have stood up to the occasion. Yes. One mantra you would like to share for a healthier us? I think one of the things that really make life worth living is being grateful. And I'm eternally grateful to life in general, but eternally grateful to the people in my life and to my pets that I love dearly. And the people and my pets really will make my life worth living, and of course my work. So gratitude, I think, is probably my mantra. Beautiful. May we request you to describe yourself in 3 words? You have, but then... So I was going to say cranky and, a disciplinarian. But I will also say I'm intuitive. I like to think I'm compassionate and compassionate, empathetic, and intuitive. Thank you. We've got a lot of learning today. And all of us, all the virtual audience, each one of us has greatly benefited. It has been a truly memorable evening. Thank you so much for all the wonderful insights and sharing your time and experience with us. It has been... Nita. Thank you. It has indeed... Thank you so much, Nita.
rewarding experience. So, and also I would like to a heartfelt thank to the entire virtual audience. अब तो पूरी दुनिया एक बन गई है और एक ही बार में सब काम हो सकता है. ये है एक पेंडेमिक की जो लर्निंग हम सभी ने ली है, you know. और हमने आपके इतने सुंदर विचार, जो आपने इतनी जिंदगी की इतनी मेहनत और एक्सपीरियंस से पाए हैं, वो सारे जो तजुर्बे हैं वो आपने सब हमारे साथ शेयर करेंगे. और मैं ऑडियंस के सो यही कहूंगी कि विचारों को सुनकर, पढ़कर बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा उन सुझावों पर चलकर. तो यही हम सभी को करना है और आगे बढ़ना है फॉर अ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर यू. जिस मनोकामना से ये पहला सुख का पूरा आयोजन करा गया है, उसका इसी में भी सार्थ है कि हम ये सब करें, अपनी जिंदगी में अपनाएं. All women for a healthier, stronger you, and by only women, all the men and the families too. Now, dear panelists, we're receiving some questions from the audience. May we request you to please address them. Dr. Joma, this question is for you from Mrs. Santana Das. She is a teacher in Kolkata and her age is 42 years. She has a very valid question. How to keep myself steady in this pandemic situation? आप उनका मार्गदर्शन करें कि वो कैसे बैलेंस बना के रहें इन चैलेंजिंग टाइम्स में. I think one of the greatest way to find our internal, as Sheila said, resilience, our internal stability, our strength, is to stay connected. Yes, now we can't stay connected physically because there's a lot of restriction of movement. But if we can stay connected through virtually or emotionally, the most important is to find that kind of emotional connect जिनके साथ हम हमारे emotional vulnerability share कर सकते हैं. When there is such a larger than life situation, तब हम अकेले ये we can't fight this war. So हमें सबको मिलके करना है. And one way of finding strength is to be able to share our vulnerability, our anxieties, the uncertainties, वो जो डर लगता है, जो maybe irrational है, the anxieties, the apprehensions. If I can share that, that itself will make me feel that no, I am not alone in this sailing together. And this is one part of it, the process of dealing with it. The other, I would say, is that let us also look back at history. There have been many situations. I am repeatedly reminded of 1890s, there was a bubonic plague in Bombay. But Bombay got back to its commercial state and commercial city's position. And most of us wouldn't even know about it. So I believe, yes, it's a global situation. I believe humankind has that resilience. We will get back. It's a matter of patience. It's a matter of buying time. And to buy time, we have to be together. That's what I would suggest. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Joma. We have a question from Mrs. Savita Jain from Allahabad. She's a homemaker. Dr. Chavi, we request you to address this. क्या होम प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने परिवार को और बचाने के लिए इस कोविड-19 से? आपने मोर देन 300 प्लस पेशेंट्स को ठीक किया है होम केयर सर्विसेज के साथ, जो आपने एक यूनिक डिवाइस करी है खुद की विजय पाने के बाद कोविड पर. तो आप इसके बारे में हमें बताएं. माय प्लेजर. तो सबसे जरूरी तो ये है कि हम लोगों को इस वायरस को समझना जरूरी है. इस वायरस की खासियत है कि ये इन्फेक्शियस है और पाया गया है कि ये वायरस, मैं जवाब हिंदी में दे रही हूँ क्योंकि ये इलाहाबाद से है, so hopefully this is what I would like to do. I know English might be there. So आप ये जो आपको ये वायरस है,
ये 60 साल या 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की है, और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीजेस हैं, जिनको कभी कैंसर रहा हो या वो कैंसर का थेरेपी अभी ले रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान से रहना है। वायरस मोस्टली यंगर लोगों में और बच्चों में ठीक रही है, इतना ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं है। तो बस ये आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है, जो हर कोई बात कर रहा है कि मास्क पहनना है हमको, जब हम बाहर जाए या कोई हमारे घर आए या कोई काम वाला घर के अंदर आए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है विच इज 6 फीट, और हमें हर वक्त हाथ धोने की बहुत अच्छी हैबिट भी अक्वायर करनी है। ये 3 चीजें तो हम मानते हैं जरूरी है। और अगर आपको हल्का सा भी जुकाम, खांसी या बुखार है, सबसे जरूरी है कि आप डायग्नोसिस लें। हमारे देश में डर है, अगर हमने टेस्ट कराया और अगर पॉजिटिव आ गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और अर्ली ट्रीटमेंट हैज शोन 100% रिकवरी, चाहे आपको कोमॉर्बिडिटी है, चाहे आप ओल्डर हैं। मेरे 300 पेशेंट्स को मैंने घरों से ही डिस्चार्ज करा है, 14 डेज उनको ऑब्जर्व करके हमारा पैकेज है, and none of them had to be admitted, and this is an age group from 16 to 89 to 95, and we have not needed, इसका मतलब नहीं है कि कोई पॉजिटिव आए तो वो सीधा अस्पताल भागे। आप अपने डॉक्टर से अपनी रिस्क असेसमेंट कराइए, अपना सब ट्रीटमेंट लीजिए, और आप अच्छी तरह घर पे आइसोलेट होके प्रॉपरली ढंग से रिकवर कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर्स को भी सेव कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। रेगुलर विटामिन लीजिए, विटामिन सी, डी, जिंक लीजिए, और प्रोफाइलैक्टिकली, और कहते हैं जैसे हल्दी, जिंजर, ब्लैक पेपर, और आप सैफरन भी बोला जाता है, हनी, गर्म पानी में उसका रोज सेवन करिए, टेक एवरी डे, वी से दैट, एंड आई थिंक दिस आल्सो कीप्स आवर इम्यून सिस्टम बूस्टेड। सबसे जरूरी है फियर नहीं होना चाहिए। फियर सप्रेसेस आवर इम्यून सिस्टम, एंड जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो हम इन्फेक्शन के ससेप्टेबल होते हैं। तो सबसे जरूरी होता है पैरानोया और फियर से दूर रहना, और उसकी सबसे जरूरी नेचर है कि आप अपनी न्यूज चैनल्स बंद कर दें और आप ये सेंसेशनल जर्नलिज्म बिल्कुल ना देखें। I think everybody will be fine. Our mortality and fatality rates are extremely low and in this country. So I think somewhere the innate immunity of Indians, having fought hundreds of infections, does help them fight this too. But आप social distancing, mask और hand wash की habit जरूर रखिए। वंडरफुल डॉक्टर छवि, और आप तो खुद ही जीवंत उदाहरण हैं। कोविड आपने बिल्कुल विजय प्राप्त करी है, और आपने इतनी सुंदर हमें बताया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें सारे जो फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी बताए गए हैं, मार्गदर्शन जो दिए गए हैं डॉक्टर्स ने, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे कोविड-19 को अवॉइड करने के लिए। मेरे पास ये क्वेश्चन आया है मिस्टर एम के गर्ग फ्रॉम नागपुर, और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। गर्ग साहब ने तो किया है, परंतु दिस इज देयर फॉर ऑल मेन एंड विमेन। So, Dr. Sheila, may we request you to please answer this question on how to reduce the belly fat? This is a universal question. Yeah. And like I said, most people think that as you grow older, gaining weight, especially around the waist, is normal. While it's true that your metabolism slows down as you age, there are ways in which you can actually keep the metabolism elevated. And one of the ways is exercise. So, end of the day, what really helps you lose weight, whether it's in the belly or anywhere else, is increase your expenditure, reduce your intake. So, burn more calories than you. Having said that, we do know that there are some forms of exercise which are better than others, especially to target areas like your excess fat around the abdomen, and that is by increasing metabolism, by increasing muscle mass. And what I mean by that is, when you strength train, when you train with resistance against resistance, either using your own body weight or using external weights in the gym
barbells, put dumbbells, etc. You will increase your muscle mass, your body becomes more metabolically active and burns more calories. Now, it's not enough to do just that. You have to eat clean. There is just no way around. You have to eat clean, cut out the refined carbs, cut out the sugar, definitely cut out the alcohol, or at least reduce it, because these are all empty calories. And eat whole foods, whole grains, lots of vegetables, beans, seeds, nuts. If you eat animal products, bring it down to the minimum that you need, because we do know that animal products and dairy tend to be pro-inflammatory. So reduce the intake and manage your stress, because stress does increase cortisol, which in turn increases belly fat. Sleep well, because again, lack of sleep can cause elevated stress, can cause belly fat. So it's a combination of everything. It's not just doing 500 sit-ups and then you lose belly fat. That it doesn't work like that. So you have to include everything: clean eating, strength training, some amount of cardio for sure, walking, running, cycling, any of those things. Stay active physically throughout the day. 1 hour of exercise doesn't mean you can sit in front of the television all day long. Sleep 7 to 8 hours a night, good quality sleep. Manage your stress well and have good quality relationships, because that again helps to ease stress. So it's a combination of everything, whether it's belly fat or fat anywhere else in the body. Superb combinations, Dr. Sheila, you have told us, and we need to follow them all in the right dose. And above all, as Dr. Chavi Mehra has mentioned, we need to not fear, because that produces negative hormones in our body. And as you rightly said, we have to try and remain stress-free, so that we get the right dosages of all our positive hormones, the dopamine, the oxytocin, serotonin, and endorphins, DOSE. For that, we have to work in a great combinations. Using the principles of lifestyle medicine, the women can be first empowered, and then they will empower their entire family, all their loved ones. This has been the forte of all the doctors on our panel today. हमारे पास ऑडियंस के बहुत ही सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं और हम कुछ को ही एड्रेस कर पा रहे हैं। ये प्रश्न आया है मिस्टर विवेक से, और वो ये बोलते हैं कि दिल्ली के लोग प्रिफर करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाने की जगह कंसल्टिंग ओवर फोन एंड इंटरनेट करें। आप बेनिफिट बताएं हमें टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के बारे में, डॉक्टर छवि मेहरा। Thank you, Rita. This is really a very close to my heart topic, because I have worked for the Telemedicine Association of India, and I have really worked very hard since 2007 with Cisco in establishing the software. I was their doctor who worked with PHC, saw many patients, and I really do believe that India में हमारे पास second opinion के लिए rural areas में, और because हमारी country के अंदर mortality, morbidity, blood pressure, diabetes, और even childbirth and infant mortality rural areas में बहुत ज़्यादा है. In fact, वहाँ ऐसी हालत है कि if a male of a family passes away from stroke or blood pressure or any of these cardiac diseases at an early age, families after families get, बर्बाद हो जाती हैं, ऐसे कहते हैं. So I think telemedicine provides a tool where अगर हमारे इंडिया में even in the deepest of rural areas there is connectivity और phone है, और उसके थ्रू अगर एक डॉक्टर उनको गाइडेंस दे पाए, बिकॉज मैं मानती हूँ कि फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई ही काम नहीं करती है और ब्लड टेस्ट ही काम नहीं करते हैं. अ लॉट ऑफ गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, एज शीला हैड अर्लियर सेड, of the environment that somebody lives in, social environments,
उनकी डाइट्स, उनके जो वो महसूस करें, जेनेटिक डिजीजेस, ये सब असेस करने के लिए एक डॉक्टर आपको कहीं बैठ के इंडिया में कहीं से कनेक्ट हो सकता है और आपको ओपिनियन दे सकता है. तो ऑन 25th of March 2020, finally the Indian government made telemedicine legal. अभी तक नॉन लीगल चल रहा था, लोग कर रहे थे, पर अब लीगैलिटी मिल गई बिकॉज इन कोविड वी हैड टू see patients over long distance. हर पेशेंट क्लिनिक आना नहीं चाहता था. There are so many patients who had so many issues. So in a way, the COVID times have accelerated the use of this wonderful technology called telemedicine, जहां आप अपने फोन से इंडिया में कहीं भी किसी भी सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर को एक्सेस कर सकते हैं. और विमेन्स हेल्थ को अगर आज के देखा जाए तो अगर वो घर से नहीं जा पा रही हैं, डॉक्टर्स विजिट्स के लिए नहीं जा पा रही हैं, अब वो अपने घर से बैठ के अपने डॉक्टर से अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हैं, ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग ले सकती हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लासेस अटेंड कर सकती हैं. टेली मेडिसिन, टेली एक्सरसाइजिंग, टेली साइकोलॉजी, टेली पैथोलॉजी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने फील्ड्स हैं in telemedicine which can benefit a common person who does not have access to a doctor. Forget about a doctor. Any expert you want is available to you at your touch of your fingers. Telemedicine is a boon to society. और मैं really in Bangalore it is used. मतलब मेरे जो मैं 25 पेशेंट रोज देखती हूँ, 25 patients, about 12 to 15 of them I see on tele, and I think there are fabulous reviews about the service that I'm able to provide. चाहे वो असम में बैठे हों, चाहे वो बिहार में बैठे हों, चाहे वो जयपुर में बैठे हों, चाहे वो केरला में बैठे हों या कश्मीर में बैठे हों, I'm able to help, I'm able to diagnose, I'm able to keep their non-communicable chronic diseases at bay by my counseling and managing them. They show me their labs every 3 months on the platform, and it is going to be an unsurpassable way of delivering healthcare to the community and to people who do not have resources and to people who don't have a doctor available in the rural areas. So yes, I am very, very thrilled, Neeta, and I hope everybody will try and use telemedicine as one of the ways of healthcare delivery. You are the champion of telemedicine, Dr. Chavi Mehra, और आपने ये जो टूल बताया है, टेलीमेडिसिन टूल, और इतने सारे और जो टूल्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं कॉमन थे, उनको आपने इतना, उनके जो बेनिफिट्स हैं इतनी खूबसूरती से बताए हैं. और हम खुद आज, मेरे को जान करके ये आनंद आ रहा है कि इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं. दूर दराज में कहीं पर भी कोई हो, उसको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, उसको काउंसलिंग मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, वो ठीक हो सकता है हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए. थैंक यू. Very welcome. This question has come to us from Ruchika Chauhan. She's 41-year-old and she resides in Shimla. She has a very typical question. How can we ever free ourselves from all labels of a mother, daughter, bahu, etc., to justify ourselves as human beings and prioritize ourselves? Dr. Sheila, we request you to answer this question. Thank you, Neeta, and thank you, Ruchika, is it? Yes, Ruchika. It's a very interesting question, but my question to you would be, why do you want to free yourself from any, I wouldn't call it a label, I think it's a role that you play in life, whether you're a daughter, a wife, or a mother. These are just roles that you play in life. Primarily, you're a human being. And human being dons many hats through his journey through life. You can't go through life in a vacuum. You can't go through life alone unless you want to go away and live in the Himalayas, and just be a saint, which is possible. But if you want to live in the real world, you do need to play several roles. And as we grow older, we learn to get better at our roles. Sometimes we don't do so well, but that's okay. That's part of life. I think it's a process of growth and progress. I think it's a process of also understanding ourselves,
self-awareness, which means that as we go along playing these roles, we need to essentially understand what is good for us. For instance, if a particular relationship is toxic and is affecting our health and our well-being, we may need to cut ties. We may need to protect ourselves. So these are all, this comes with age and experience and a lot of, falling down and getting up. But I think it's a process, and I think that's what life is all about. I don't think we should fear it. I think we should embrace it and enjoy the journey. Don't look at it as labels, just look at it as, part of life and something that you take on as experience as you go through life. Absolutely. So wonderful, Dr. Sheila, because difficulties brings out the best in champions. So we have to keep on trying. At the same time, आपने बताया कि कोई relation अगर सही नहीं है तो उसको severe करना, cut करना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में से. और दूसरा ये है कि I think all women are born managers. They know how to juggle all the roles, the different roles that they play. Bahu ka, daughter-in-law ka, mother-in-law ka. Handling their domestic staff is also a big juggling which all of us have to do. Using the principles of lifestyle medicine, the women can be first empowered and then they will empower their entire family, all their loved ones. This has been the forte of all the doctors on our panel today, inspiring men and women to change their lifestyle for a healthier and stronger us. With these words, I thank you all from the bottom of my heart and Pehla Sukh for doing this wonderful initiative, spreading this awareness all over the world, all over India. It requires a lot of courage to be doing these kind of work, which are socially benefiting to all humankind. With these words, I hand over the mic to Mr. Kala to take the proceedings forward. Thank you so very much, everyone, Thank you. for being a wonderful audience, and what a wonderful panel you all have been. धन्यवाद नीता जी इस सेशन को इतने कुशलता से संचालन करने के लिए, और धन्यवाद हमारे तीनों पैनलिस्ट का भी जिन्होंने महिलाओं से संबंधित फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में हमें इतना कुछ बताया. आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू गेन अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरेक्शन दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम. और आगे ये बताना चाहेंगे कि ये वुमेन वेलनेस की सीरीज में हमारा पहला वेबिनार था. आगे भी इस तरह के और प्रोग्राम हम लाते रहेंगे. अब हम हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम और पार्टनर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हमारी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं. हमारे चीफ मेंटर है मिस्टर नरेंद्र बख्शी. मिसेस सांड चेयरपर्सन है इंडी फैमिली फाउंडेशन की, और मिस्टर बसंत जैन है को चेयर इंडी फैमिली फाउंडेशन. मिस्टर सोमनाथ चटर्जी को फाउंडर है CWC और ICC वेलनेस के. मैं विंग कमांडर काला, I am the advisor for Pehla Sukh. Then we have Mr. Adi Gurudas. He is host and content advisor of Pehla Sukh. We have Nitin Jain. He is the convener. Mrs. Divya Jain. She is taking care of marketing and PR for Pehla Sukh. Mr. Jiten Gautam. He is a coordinator. Mr. Tushar Garg. He is our working executive. And Mr. Devan, he helps us with video editing. और फिर साथ में है हमारे एम्बेसडर्स मिस्टर शिव खेरा, जिनको आप सब जानते हैं. मेजर जनरल CP सिंह वॉर वेटरन है, इनको भी आप सुन चुके हैं. मिस्टर नीता, इनको आपने अभी सुना, इन्होंने इतने बढ़िया से इसका संचालन किया. अब हम देखना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का और पार्टनर्स का नाम. तो हमारे साथ में है बिटोसा फ्रॉम जयपुर, ज्वेलर्स एसोसिएशन, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, SKIT जयपुर, लाइफ शिक्षा, Shri Mahavir Digambar Jain Alumni Association, Employers Association of Rajasthan, IIS Jaipur, and host Virtual IO. Wellness partner हैं CK बिरला हॉस्पिटल. हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं KP ऑटोमोबाइल्स, प्रथम सॉफ्टवेयर,
and Data Infosys Limited. Our NGO partners are Udan and Raksha. And अब हम बताना चाहेंगे जो हमारी नेक्स्ट वेबिनार है वो है फूड फोकस के ऊपर, वो है 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। उसमें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डॉक्टर विमल चाजेड़ को, जो हार्ट केयर और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है और इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ भी काम किया है। इंटरेस्टिंगली ये आपको एक डेमो भी देंगे जीरो ऑयल कुकिंग का। तो हम आप सबका इंतजार करेंगे 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। जिन भी लोगों ने आज रजिस्टर कराया है इस इवेंट के लिए, they can download their certificates from www.pehlasukh.org/certificates, and please submit your feedback about the webinar here at www.pehlasukh.org/feedback. And please stay connected on the YouTube. Subscribe on YouTube for updates, youtube.com/pehlasukh, और साथ ही ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप वेलनेस ग्रुप को। दिस इज अ नो फॉरवर्ड ग्रुप, यू नो, दिस इज ओनली मैसेजेस फ्रॉम द एडमिन टू यू। तो प्लीज सेव एंड से नमस्ते। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अ वंडरफुल इवनिंग।